Well, this is a question on allied angle, and you know that, I repeat, if I add multiple of 2 pi or subtract multiple of 2 pi to any angle, it does not change the angle at all. It has the same value for all the trigonometrical ratio. The addition or subtraction of multiples of 2 pi, that is 360 degree, or in radian we call it 2 pi, does not change the angle significantly. So, making use of this logic, work it out. What is the expression finally coming down to? Let me deal with them one by one. पहला एक्सप्रेशन क्या है बेटा? बोलिए. साइन फोर्थ पावर अभी अभी हम केवल बात कर रहे हैं व्हाट इज साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ये किसके बराबर होगा? एनीबडी विल आंसर दैट? बाद में हम फोर्थ पावर भी रेस कर लेंगे. दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? ये किसके बराबर होगा बताइए? सी, आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स. I mean, I deliberately, somebody was asking me in the class that 270 के लिए फॉर्मूला दे दीजिए. हमने कहा क्या करोगे अपनी बास्केट बढ़ा के, कितने फॉर्मूले याद रखोगे? When it is required, you can do it. How can you do it? बोलिए. Can you write it as? बोलिए sin pi plus pi by 2 minus alpha. Can you? बोलिए can you write it like this or not? अरे भाई, pi by 2 plus pi by 2 is 3 pi by 2 or not? Pi is 180 degree. Mind it बेटा, mind it. अब आपने इतने पूरे एंगल को एक एंगल कह दिया. फॉर द टाइमिंग आपने ओवरलुक किया और आपने कहा भाई मैं इसको एक कोई सिंगल एंगल बोल रहा हूँ. इफ आई एम कॉलिंग इट अ सिंगल एंगल, व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा? पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. बोलिए अग्री और नॉट? तो क्या हो जाएगा ये? बोलिए दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम साइन माइनस, बोलिए अग्री और नॉट, साइन of whatever is written here. बोलिए agree or not? And what is written here? Remove that, uncover this. If you uncover this, is it pi by 2 minus alpha or not? The meaning thereby, if I uncover this, agree or not, so I get this is minus sine pi by 2 minus alpha. How many understand this? Tell me. Everybody understand this? कितने लोग समझ गए? रे तो हाँ, समझ में आया कि नहीं बेटा? ध्यान भी हाँ है ना? नहीं समझ में आया? अभी केवल इतने को देखिए. इज दिस 270 और नॉट? बोलिए 3 पाई बाई 2 इज 270 और नॉट? 270 को मैं 180 प्लस 90 लिख सकता हूं कि नहीं? और माइनस अल्फा को अल्फा लिखा रहने दिया. नाउ व्हाट आई डू इज आई कॉल दिस सिंगल एंगल, लेट्स कॉल दिस एज सम एंगल थीटा. तो इज इट साइन पाई प्लस थीटा और नॉट? साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा और नॉट? थीटा की जगह क्या प्लेस होगा? वॉट एवर इज इन द अंडर द कवर. बोलिए अग्री और नॉट? जान भी आ रही है कवर में अंदर क्या था? बोलिए. ओ माय गॉड, व्हाट वाज देयर इन द कवर इनसाइड? ओके, पाई बाय 2 माइनस अल्फा. तो शुड आई राइट दिस? समझ में आ गया ये बात कि नहीं आ गया? अब हाउ मेनी अंडरस्टैंड दैट? रेज योर हैंड. हाँ, फाइनल आंसर? Oh, that's great. You have worked out the final answer also. I'm still in the first expression. Oh, that's great. Good class. One, good, very good class. And people have worked it out, no doubt about that. With passage of time, everybody will develop this speed. अब sin pi by 2 minus alpha is cos alpha. तो क्या हो गया ये बेटा बताइए? Minus cos alpha. Is it minus cos alpha or not? Is it minus cos alpha or not? ये पहला वर्कआउट कर लिया. अब साइन 3 पाई प्लस अल्फा लिखा हुआ है. चलिए राइट, इसको भी क्रैक कर ले. सी दैट इज हाउ इन द बिगिनिंग यू विल टेक टाइम बट लेटर ऑन यू विल नॉट. दूसरा एक्सप्रेशन है साइन 3 पाई प्लस अल्फा. एम आई करेक्ट और नॉट? विच कैन बी रिटन एज साइन 2 पाई प्लस अल्फा. एम आई करेक्ट और नॉट? 2 पाई इज इनसिग्निफिकेंट एंगल. 2 पाई कोई अंतर नहीं करता, इसलिए क्या हो गया बेटा? साइन पाई प्लस अल्फा. बोलिए अग्री और नॉट? और साइन पाई प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा. एम आई करेक्ट और नॉट? सबको समझ में आ गया? दूसरा भी अग्री और नॉट? द थर्ड एंगल इज पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज डायरेक्टली ब्रेकेबल. तो कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ पे तुरंत समझा दूँ.
5 पाई, चलिए इसको भी लिख दें 5 पाई. I needed space, you know. So maybe I can scroll it down and work it out for you. Over here, sin 5 pi minus alpha. Sin 5 pi minus alpha को break करते हैं. Sin 5 pi minus alpha can be written as what? बोलिए बोलिए. Sin 2 into 2 pi plus pi minus alpha. How many understand this? बेटा समझने की कोशिश करिए आप लोग. क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या 2 into 2 is 4 plus 1 5? अग्री और नॉट? आपने देखा किसी भी एंगल में से 2 पाई के मल्टीपल को हटा सकते हैं. 2 पाई के 2 मल्टीपल हटा दिए तो ये किसके बराबर हो गया? बोलिए. विल इट बी साइन पाई माइनस अल्फा और नॉट? अग्री और नॉट? साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा. हाउ मेनी अंडरस्टैंड ऑल द थ्री थिंग्स? कितने लोग तीनों बातें समझ गए? रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एट ऑल. अग्री? समझ में आ गया? Happy you all? I can't see the warmth in the class. I mean, raise your hand like this if you have understood that. If you have not, you could not, Anika? Oh, I mean, it is recollection was not good enough for you. I guess you need to go through the lecture. Anyway, this is the last question in this article. नया topic. इसके बाद 5 मिनट शुरू होगा तो that will be understandable by you. I hope. That is compound angle. तो अभी तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. So having said that, मेरे पास क्या आ गया ये? I get 3, बोलिए agree or not? And this becomes equal to what? माइनस अल्फा फोर्थ पावर रेस करें, क्या आएगा? cos फोर्थ पावर अल्फा. And this came out to be minus sin alpha. इसकी पावर रेस करेंगे sin फोर्थ पावर अल्फा. Appreciate that or not? And minus, I get to see that sin pi by 2 plus alpha is what? Cos alpha. Genuinely cos alpha. So cos 6 power alpha. So I get cos 6 power alpha plus over here I get sin 6 power of this. And it came out to be sin alpha. If you see that I have worked it out in the white color. Did I or not? So thus it come out to be sin alpha. तो ये हो गया sin 6 power alpha. सिमिलर एक्सप्रेशन आपने 2 दिन पहले ब्रेक किया था. सिमिलर एक्सप्रेशन आपने ब्रेक किया था तो आई डोंट थिंक इट इज बिग डील एट ऑल. बट तब भी आप कर लीजिए तुरंत, कोई बड़ी बात नहीं है. राइट, लेट मी वर्क इट आउट. यही फाइनली एक्सप्रेशन आ गया. अब इसको वर्कआउट करते हैं. देखिए बेटा, आई टोल्ड यू एंड दिस इज सो सिंपल. 3, कैन यू राइट इट एज, बोलिए बोलिए बोलिए, कैन यू राइट इट एज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा? बोलिए अग्री और नॉट? सबको समझ में आ गया इसको? बोलिए हाँ है ना? राइट. इफ आई कॉल कॉस स्क्वायर अल्फा एज ए एंड साइन स्क्वायर अल्फा एज बी, तो कांट यू सी दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाज रिटन? बस 2ab और चाहिए था. राइट, तो 2ab मैंने ऐड किया, 2ab मैंने सब्ट्रैक्ट किया. तो डू आई गेट कॉस स्क्वायर? कितने लोग समझ गया? रेज दो हैंड. राइट, 2 दिन पहले यही काम किया हुआ था. आई गेस आई डिड द सेम थिंग. ओके, ओवर हियर मैंने cos स्क्वायर अल्फा को क्या कहा? आई से cos स्क्वायर अल्फा एज, बोलिए बोलिए बोलिए, cos स्क्वायर अल्फा एज a एंड sin स्क्वायर अल्फा एज b. तो इज इट a क्यूब प्लस b क्यूब और नॉट? a क्यूब प्लस b क्यूब कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू a प्लस b इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. इज इट और नॉट? Right, a similar expression we have worked out in the previous turn, I guess. Minus twice of, I put the curly bracket, I get cos square alpha plus sin square alpha in one bracket. In other bracket, I get cos fourth power alpha minus, I need space better. I need space, so I need to do away with this, I guess. I hope that you have understood and it is not so no longer required to be written on the wall. So I rub it off. Cos fourth power alpha a square minus ab cos square alpha sin square alpha plus sin fourth power alpha. All of you understand this? Boli agree or not? All of you understand this? Right? Can you see that cos square alpha plus sin square alpha 1 हो गया, तो it gives you 1. Does it give you 1 or not? Minus 2 sin square alpha cos square alpha. पहला ब्रैकेट तो केवल इतना ही कंटेन करेगा भैया.
सेकेंड ब्रैकेट में सारे मजे आए। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? माइनस, कैन यू सी दैट? कैन यू सी द beauty of this? In the second bracket you have minus 2 over here. Yes, we have minus 2 over here. And then this bracket comes out to be 1 because cos square alpha plus 1 square alpha. So that is एक 1 आ गया. And in this bracket again the same technique can be applied. Can you see that cos 4th power alpha and sin 4th power alpha are there, which was here also. और इसको मैंने लिखा था cos square alpha plus sin square alpha whole square minus 2 sin square alpha cos square alpha. तो इन दोनों क्लब करके मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, और एक माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी था. तो क्या हो जाएगा? एम आई प्रोसीडिंग टू फास्ट और यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? इफ एनीबडी डज नॉट तो प्लीज लेट मी नो. राइट, सो इन द सेकेंड ब्रैकेट इट कम्स आउट टू बी, राइट, इफ आई पुट अ कर्ली ब्रैकेट हियर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर minus 3 sin square alpha cos square alpha. Happy you all? कितने लोग समझ गए? रह दो हैंड. जानवी बेटा क्या नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ. I will scroll it and write it. देखिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है. Maybe I would have written one more step for you to understand it better. ओके, आई एम यूजिंग रिपीटेडली दिस. हम रिपीटेडली इसको यूज कर रहे हैं. cos 4th पावर अल्फा प्लस sin 4th पावर अल्फा को मैं क्या लिख रहा हूँ? cos 4th पावर अल्फा प्लस sin 4th पावर अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस अगेन एंड अगेन. आर यू हैप्पी विद दिस? आई हैव जस्ट एडेड दिस एंड सबट्रैक्टेड दिस. मैंने इसको ऐड किया और मैंने इसको सबट्रैक्ट किया. आप बताइए जानवी, आर यू फाइन विद दिस? किसी भी चीज़ में वही चीज़ ऐड करें, वही चीज़ सबट्रैक्ट करें, विद सेम और नॉट? अब अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा को कह दूं क्या A और sin स्क्वायर अल्फा को कह दूं क्या B, तो क्या ये A स्क्वायर है कि नहीं? क्या ये B स्क्वायर है कि नहीं? क्या ये 2AB है कि नहीं? तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab will make up for what? Make up for a plus b whole square or not? Will it or not? That's what I'm doing in every step. So I write it as cos square alpha plus sin square alpha whole square. इतने पार्ट को हमने cos square alpha plus sin square alpha whole square लिख दिया, और माइनस 2 sin square alpha cos square alpha. Happy you all? यही काम बार बार कर रहे हैं, बस इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं. समझ में आ गया बेटा ये बात? पक्का? everybody understand that? Everybody sitting in the class? So that's what I've done over here. Can you see जानवी, यहाँ पे cos 4 पावर अल्फा sin 4 पावर अल्फा था, तो मैंने क्या किया कि भाई इन दोनों को तो मिला के मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, पर एक माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी था, तो माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैप्पी यू आर नॉट हैप्पी? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग रिपीटेडली, नथिंग एल्स एट ऑल. I guess now we are in the final step. I get 3, I get minus 6 sin square alpha, and it is a repetition of discussion, I guess. In the other form we have already done that. And this gives you 1. This gives you 1 or not? Cos square alpha plus sin square alpha. So minus 2 on minus 3 into minus 2 plus 6 sin square alpha cos square alpha. Okay, that's the good news. This gets cancelled off with this completely. I get to see the 3 minus 2, and that is 1. That is 1. Happy you are? Happy you are? किसी को कोई डाउट? It was a full length IIT question, beta. They required some efforts, but good, Gibran, and very fast working, and Hiram also, and many people did that. I know they are capable of doing that. ये था अलाइड एंगल बेटा. अलाइड एंगल कितना भी कर दिया जाए, π/2 माइनस π/2 प्लस थ्रू. अब 90-20 की आदत छोड़िए. 90-20 का हमने करते हैं, बच्चों की तरह लिखते हैं, बट आदत डालिए अब π/2 बोलने की, 90 को π/2 बोलने की, 180 को पाई बोलने की, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी डन इन रेडियंस नाउ. अग्री? मतलब दोनों सिस्टम से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए. तो नाउ
Plenty of allied angles were required in this. Plenty of. कुछ पढ़े हुए कुछ नहीं पढ़े हुए. ये तो डायरेक्टली पढ़ा था आपने पाई बाई 2 प्लस अल्फा. भाई इसमें देखिए कौन सी लॉजिक काम आई. इसमें लॉजिक काम आई कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई कैन बी टेकन आउट और कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड और कैन बी एडेड विदाउट बॉदरिंग. कितना भी मल्टीपल हो उसको निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. इसमें क्या काम आई, इसमें भी यही काम हुई. मल्टीपल ऑफ 2 पाई कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. 2 पाई हटा दिया, इसमें देखिए 4 पाई हटा दिया था. और इसमें हमने क्या किया कि 270 वाला मामला, तो हमने कहा 270 के लिए हमको फॉर्मूला नहीं पता. व्हाट आई डू इज आई ब्रेक इट अप टू 180 प्लस 90 पाई प्लस पाई बाई 2. पहले पाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा दिया. हैप्पी यू ऑल और नॉट हैप्पी यू ऑल? दिस इज व्हाट आई हैव डन. आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू पाई एंड पाई बाई 2. पहले मैंने इसको एक एंगल मानते हुए हमने कहा ये तो साइन पाई प्लस थीटा है. अगर साइन पाई प्लस थीटा है तो माइनस साइन ऑफ दिस एंगल दिस थीटा और नॉट. यही थीटा है कि नहीं है? कुड यू अप्रिशिएट दैट नॉट? फिर हमने रियलाइज किया ये तो पाई बाई 2 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो बदल जाता है, कॉस साइन हो जाता है, साइन कॉस हो जाता है, तो हमने कॉस अल्फा बना दिया. हैप्पी यू ऑल? तो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइड एंगल वर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एंड दिस इज नाइस क्वेश्चन ऑन अलाइड एंगल. Nice question on allied angle because every knowledge, every bit of knowledge is required over here. Happy? We go over to the next step. And the next step is compound angle. From here the discussion goes further and slightly more significant. Most of the questions which are asked in competition are asked beyond this level, compound angles. Right? I wanted C to be capital. Let's see, does it or not? Yeah, it does. Compound angles. यहाँ से अनिका आप सीखने की कोशिश करिए. इट्स अ न्यू डिस्कशन. इट डज नॉट हैव एनी बेयरिंग ऑन अलाइड एंगल्स. बस आप साइन कॉस का बेसिक जानते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू विल बी थ्रू. डियर फ्रेंड, इन कंपाउंड एंगल आई विल बी डीलिंग विद एडिशन ऑफ एंगल्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स. आई नीड टू डील विद हाउ द साइन ब्रेक डाउन व्हेन वी टॉक अबाउट sum of the angles, when we talk about difference of the angle. So first, sum the angle I need to deal with for 3 trigonometrical ratio. The first article I take in this is तीन बातों की हमको जरूरत पड़ेगी. आई नीड टू लर्न. हमसे किसी ने पूछा व्हाट इज साइन ए प्लस बी, तो मैं साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी के मैं इसको बताऊंगा. दिस कॉल्ड कंपाउंड एंगल. क्यों जरूरत पड़ेगी? समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज साइन 75 डिग्री. Somebody asked me what is sin 75 degree. I know that 75 is 30 plus 45.
How nice are 30 and 45? I know their trigonometrical ratio, but 75 is not very well known. So I'll be needing this, right? In a similar manner, I'll be needing cos A plus B. I'll be needing tan A plus B. बाकी तीनों की बात हमने नहीं किया क्योंकि बाकी तीनों उसके रेसिप्रोकल होंगे. अगर कोई पूछता भी कोसेक A plus B तो साइन A plus B निकाल कर रेसिप्रोकेट कर देंगे. करना क्या है? They are just reciprocal of these three or not. So I make a figure for this derivation, and it's a long figure. Geometrically, we need to do that, right? I need to take any point over here, drop the perpendicular on this. I drop the perpendicular in here, this as well, and I drop the perpendicular on this. I call one of the angle as A, one of the angle as B. इनमें से एक एंगल को मैंने ए, एक एंगल को बी कह दिया. कौन कौन परपेंडिकुलर है? This is perpendicular, this is perpendicular, right? This is perpendicular. और not only that, एक और construction किया. I could have made a bigger figure also. If you can't see this much detail, then I'll rub it off and make a. And this is also perpendicular on the perpendicular. Maybe I can draw it like this, you know. You have seen all the constructions. I call these points as P, Q. इस point को I call it P, Q, and of course R. I call it M. I call it N. Is the figure clear to you all? Is the figure clear to you all? Does anything bother you? No, not at all, I guess. What is sin A plus B in this? Let me do away with this because अभी हम लोग कल इसकी बात कर रहे हैं. इसको बात कर लेंगे. What is sin A plus B? Sin A plus B is total angle this or not? Sin A plus B could be seen in the triangle OMQ. OMQ or not? Is perpendicular upon hypotenuse. बोलिए agree or not? तो OMQ, triangle OMQ में देखा मैंने. I'm so sorry. What did I select? Okay, I'm so sorry. Let me undo that. I see the triangle OMQ. This triangle. This is the right angle triangle. I can write sin A plus B. Base के angle का sin लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ. So what is the sign of this angle gonna be? Sign of this angle gonna be perpendicular upon hypotenuse. That is perpendicular is QM. Appreciate that upon Happy? Now break it down into different sets of angles. What is QM?
Qn can be broken down into QR plus RM. It can be broken down into QR plus RM. If you allow me in the same step, I can do that. If you allow me, क्या RM can be written as Pn or not? Because they are the front sides of rectangle. अगर allow करिए तो इसी में लिख देना, तो अगले में लिख देंगे, चलिए कोई बात नहीं. Now, अब इसको आप ऐसा ब्रेक करिए कि B के रेशियो अलग आ जाए, A के रेशियो अलग आ जाए. I give you 2 minutes. Break it in such a manner that कि एक E वाला ट्रायंगल मॉडल हो जाए, कौन वाला? E वाला ट्रायंगल मॉडल हो जाए, E वाला ट्रायंगल मॉडल हो जाए. तो साइन है अलग से, साइन भी अलग से, कॉस है अलग से, कॉस भी अलग से पार्टिसिपेट करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? बोलिए एग्री और नॉट? दिस इज व्हाट इज द असाइनमेंट. हाउ विल यू ब्रेक इट डाउन इनटू दिस फास्टर? एक बात का ध्यान और रखिएगा आप, डिड आई टेल इन दिस क्लास बिफोर और आई डिडंट, आई गेस, एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंगल, ये बोला है कि नहीं बोला हमने? एक राइम बताते हैं, मैथमेटिकल राइम. मैं नहीं जानता कि क्लास 12 तक, इफ यू कंटिन्यू विद मी, हाउ मेनी टाइम्स इन फिजिक्स क्लास एंड हाउ मेनी टाइम इन मैथ्स क्लास आई विल स्पीक दैट. 100+ टाइम तो आप ही क्लास में बोल चुके होंगे अभी से. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक राइम, दैट इज, मैं आधा बोलता हूँ, आधा इन लोग बोल देते हैं, इतना अच्छी राइम बन चुकी है. एंड द राइम इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. नो दैट? हम सरप्राइज होते हैं जब बोलते हैं, और बच्चे पहली बार कहते हैं कि अजीब बात है. आइए देखिए, बहुत सिंपल सी बात बताएं. दो लाइन्स है बेटा, दो लाइन्स है, अग्री और नॉट? दो व्हाइट लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है? अल्फा. कितना है? अल्फा. दोनों व्हाइट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन्स हैं. क्या है? आइए देखें. क्या ये लाइन इस व्हाइट लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? क्या इस लाइन, ये लाइन इस व्हाइट लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है. मैं क्लेम करते जा रहा हूं बहुत बड़ा. प्लीज ऑल ऑफ यू लुक एट द वॉल. रौनक प्लीज लुक एट द वॉल. अनिल लुक एट द वॉल. ये दोनों येलो लाइन दोनों व्हाइट लाइन के परपेंडिकुलर है. आई एम गोइंग टू स्पीक एंड राइट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर. तो ये एंगल भी अल्फा होगा. व्हाट नाइस राइम इट इज. और इसको इतनी बार यूज करेंगे न्यूटन लॉज में और इसमें और उसमें, पता नहीं कहाँ कहाँ, हर जगह तो यूज हो जाता है. एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. कैसे बेटा प्रूव करते हैं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? विल इट बी 90 माइनस अल्फा और नॉट? होगा कि नहीं होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को ध्यान रखिएगा. इसको राइम मान लीजिए बिल्कुल. दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होता है. कम वॉट में वही एंगल होता है. कुड यू अप्रिशिएट दैट? तो 1000 टाइम्स आई विल स्पीक इन योर क्लास एंड यू विल रिक्वायर टू फिल इन द ब्लैंक्स. आई विल ओनली स्पीक एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देन द साउंड विल कम फ्रॉम द क्लास मिक्स्ड साउंड, दैट इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. राइट? सो प्लीज नोटिस दैट. यहां पे कुछ ऐसा लग रहा है क्या? कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट दिस एंगल इज अल्फा ए? कितने लोग कन्विंस हो गए? रेज योर हैंड. व्हाई दिस ब्लू लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट लाइन? बोलिए हाँ है ना? दिस ब्लू लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट लाइन. तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी होगा कि नहीं होगा? सब लोग समझ जाए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? हैव यू अंडरस्टूड दैट? हाउ मेनी अंडरस्टैंड दैट? रेज योर हैंड. अग्री और नॉट? इज दैट एंगल है और नॉट? इट्स अ न्यू थिंग. अनिका बेटा अभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको लगेगा शुरुआत चीज बहुत टफ थी, अभी भी ध्यान ना दें. पर अब बिल्कुल नई चीज है. अगर आपने सीखा तो गलत किया. कारण क्या है कि इट हैज नो बेयरिंग ऑन द
डिस्कशन बिफोर, राइट? कोई इसका लिंक नहीं है, कोई इसका वो नहीं, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ है, इसको सीखिए आप, कोशिश करिए। ये एंगल भी ए है। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को और दिखा, कौन? PQR। PQR भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, उससे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पुल किए जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा काम बट बहुत ही इंट्यूटिव काम किया। आप जानते हैं कि सेम थिंग कैन बी रिटन एज व्हाट? बोली बोली क्या लिखी जा सकती है? QR अपॉन OQ। QR upon OQ or not, right? QR upon OQ ये लिखा जा सकता है कि नहीं? आप कहें क्या बदमाशी है सर, QR upon OQ सीधा सीधा क्यों नहीं लिखते आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ करने जा रहे हैं। कोई भी रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से करे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड एक नंबर से कर दिया, किससे? PQ से। चलेगा? कोई भाई ये QR अपॉन OQ था कि नहीं? हमने PQ मल्टीप्लाई PQ डिवाइड कर दिया, कोई आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अग्री और नॉट? दूसरा क्या था बोलिए? दूसरा क्या था? RM अपॉन OQ था। RM could be written as PN or not? RM can be written as PN, so it becomes PN upon what? OQ। बोलिए अग्री और नॉट? PN अपॉन OQ और नॉट? आपने कहा फिर बदमाशी तो करने जा रहे हैं। हमने कहा करना तो है मेरे को मन। हमने लिख दिया यहां पे OP। Happy you all? I have not written anything extra. I have not changed anything. Are you all convinced about it or not? सब लोग convinced हैं? अब बस इंटरप्रेट करिए इन चार रेशियो को, क्या क्या है आप खुद बोलिए, आंसर आ गया मेरा। What is QR upon PQ? QR upon PQ, is it cos alpha or not? Is it cos alpha or not? अरे भाई इतने छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ना आप, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यू चेक इट आउट, क्या QR अपॉन PQ क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? ए के लिए बोलिए है कि नहीं है? इज इट और नॉट? दैट्स व्हाई इज इट cos alpha और नॉट? It is cos alpha. Cos A, I'm so sorry. PQ upon OQ. PQ upon OQ. Oh my God, yet another triangle. कौन सा triangle? Oh, looks like that. I am talking about this triangle. What is that? PQ upon OQ. PQ upon OQ. Is PQ upon OQ sin B or not? Sin B or not? बोलिए हाँ या ना? Right, that is sin B. PN upon OP. Let me first do away with the drawing, otherwise it will interfere there. PN upon OP. Oh, yet another triangle, yet another triangle. PN upon OP. Can you see that? What is PN upon OP? Can you see this triangle? PN upon OP is sin A. Sin A or not? That is sin A. It comes out to be sin A. And we have OP upon OQ. OP upon OQ. Again I go back to this triangle. Don't I? OP upon OQ क्या हो गया बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर दिस B or not? तो cos alpha or not? Agree or not? So this is cos A or not? Sorry, A. Cos B or not? Oh my God, I get what is sin A plus B. Sin A plus B is this way, right? बल्कि I write in the vice versa manner. इसको पहले बोल देते हैं sin A cos B plus cos A sin B. It gets distributed into sin and cos. All of you are convinced with three-line proof? All of you are convinced about it or not? Happy you all? कोई डाउट किसी को?
Right? Nice construction this was, and this is a very simple thing to do. Sin A plus B, right, is equal to sin A cos B. So I come out with this formula, and that is, write it in box manner, and that's a great achievement. What is that? I get to see that sin A plus B is equal to, इसको पहले लिख लेते हैं. Normally customary to give preference to cos B plus cos A sin B. Oh, sorry. Any doubt whatsoever about it? Koi doubt? Let me develop the formula for cos A plus B. What is cos A plus B? तो sin का तो पूरा खेल समझ गए आप. Sin A plus B happens to be sin A cos B plus cos A sin B. Agree? What about cos A plus B? Let me group it and copy it, so that I can, I don't have to make. लिख लिया आपने बेटा? Can I proceed? Same way. Now I develop what is cos A plus B. What is cos A plus B? Can you see that this whole angle happens to be A plus B? Will you agree or not? And the corresponding triangle in which I can write the ratio as this triangle or not. So what is cos A plus B? Cos A plus B is OM, is the base, upon OQ or not. OM upon OQ. So it comes out to be OM upon OQ. Oh, I'm so sorry. Shit. It's strange. OM can be written as difference of two. What difference of two? ON minus MN. बोलिए हाँ है ना? ON बोलिए minus MN upon OQ. MN can be written as RP. MN can be written as RP. रेक्टेंगल के फ्रंट साइड्स हैं, वो हम अगले स्टेप में कर लेंगे. हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और चालाकी से लिखा ON अपॉन OQ. आप फिर आपको बदमाशी सोच रही है? हाँ सोच रही है. ON अपॉन OQ. कुछ बीच में इंसर्ट करने जा रहे हैं, कुछ नंबर इंसर्ट करेंगे. आप बताइए क्या इंसर्ट करें? माइनस MN को मैंने RP लिख दिया. RP लिख सकता हूं अपॉन OQ. अब मैं यहां कुछ इंसर्ट करने जा रहा हूं. आप गेस करिए क्या क्या इंसर्ट करेंगे कि मजा आ जाएगा. यस, ब्यूटिफुल. OP और यहां पे good. Now I started guessing this. What a great class it is. बस इंटरप्रेट कर लीजिए, बस इंटरप्रेट कर लीजिए. थर्ड लाइन इज द आंसर. थर्ड लाइन इज द आंसर. एंड व्हाट डू यू गेट? क्या मिला आप बताइए बेटा, खुद बताइए, खुद बोलेंगे आप. व्हाट इज ON अपॉन OP? ON अपॉन OP क्या है ये? ON अपॉन OP इज cos A और नॉट? बनाने की जरूरत तक नहीं. अब आप लोग को फील हो गया क्या करना है. व्हाट इज OP अपॉन OQ? OP अपॉन OQ.
इट इज cos b बेटा, cos b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है। OP देखिए ना, क्यों साइन कर रहे हैं, आपको आदत उसकी पड़ी है क्या? ये देखिए, ये क्या ये OP इज द बेस और नॉट? इज इट द बेस और नॉट? एंड OQ इज द हाइपोटेन्यूज, तो अभी भी cos ही है, ये भी cos है। cos में मामला उल्टा होता है, cos है cos b माइनस व्हाट इज RP अपॉन PQ? RP upon PQ is sin A. Very good interpretation, Raghavam. And what is PQ upon OQ? PQ upon OQ is sin B. तो भैया cos की अपने अलग नक्शे हैं। cos के नक्शे ये, cos कहता है देखो भाई दोनों बार हम ये एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, sin कहता है बांट के sin A प्लस B sin A cos B प्लस cos A sin B, पर cos A प्लस B cos A cos B, दोनों एंगल cos पहले मल्टीप्लाई होता है। एंड वन मेजर डिफरेंस विच पीपल मेक मिस्टेक अबाउट इन द बिगिनिंग, नॉट इन द एंड, इट इज पीनट्स लेटर ऑन। ये सब जो आज इतने रिगरसली हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उसकी तरफ आप नजर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आपका फिंगर टिप पे होंगे दोनों फॉर्मूले। द टू फॉर्मूलाज वुड बी इन योर फिंगर टिप, अग्री और नॉट? द डिफरेंस बिटवीन द टू इज साइन। जब a प्लस बी निकालते हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन आता है, कैन यू सी दैट और नॉट? पहला डिफरेंस यहाँ प्लस साइन आता है और cos A प्लस बी में यहाँ पे माइनस साइन आता है, अग्री और नॉट? तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, शुरुआत में उतना रहे cos A प्लस बी में भी प्लस होगा, तो ये बात गलत है, इसको करेक्ट कर ले कि सो सॉरी व्हाट डिड आई टेक, राइट? ये बात नोटिस कर ले क्लियरली, ये लाइन माइनस है, तो cos A प्लस बी में माइनस साइन होता है, पहली बात। और दूसरा डिफरेंस क्या है sin A प्लस बी और cos A प्लस बी में? sin A प्लस बी डिस्ट्रीब्यूट करके चलता है, cos sin करके चलता है, पर cos A प्लस बी दोनों cos और दोनों sin, अग्री और नॉट? तो sin A प्लस बी sin A cos B प्लस cos A sin B, whereas cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Could you appreciate that or not? I think you're done. Dear friends, now we are interested in finding the third. What is the third one? Third one is tan A plus B. Why should I do it so rigorously? चलिए अभी है। Why should I do it so rigorously? क्यों इतना रिगरसली करें? दोनों का रेशियो ले लें, हाँ, चोरी से तो काम कर सकते हैं और करके निकाल भी सकते हैं, बट इट विल बी अ डिसेंट चोरी ना। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है डिराइव tan A plus B, would you prefer to do cos A plus B and sin A plus B and take the ratio of? I don't know what is the intention of the examiner. Is he wanting to follow this route or not? But this is a wrong route. tan A plus B को tan A plus B की तरह से डील करिए, और it will be slightly more difficult to deal with, but I will do that. Hold on, don't be impatient about it, beta. tan A plus B, इसमें कुछ ज़्यादा खेल खेलना पड़ेगा. A lot of things have to be done. Diagram will remain same, but it will require a bit more of efforts. tan A plus B वैसे तो आप कर ही लेंगे, दोनों का रेशियो लेके हम फंडामेंटल तरीके से बता रहे हैं आपको. What is tan A plus B? वही ट्रायंगल से बिगिन किया, कौन ट्रायंगल से आपको पता है, इसी ट्रायंगल से बिगिन किया. tan A plus B is gonna be perpendicular upon base, perpendicular is gonna be QM upon OM, QM upon OM, QM upon OM. दोनों को ही मैंने बदल के लिख दिया. QM को हमने लिख दिया क्या, QR प्लस RM. क्या RM को मैं PN लिख दूं? अभी भी बुरा नहीं मानेंगे आप, PN. और OM को मैंने लिख दिया ON माइनस MN. अब बताइए क्या करें कि tan के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए.
होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रॉल करेंगे इट विल रिक्वायर डिसेंट अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन. इट बिकम्स QR अपॉन ON माइनस PN अपॉन ON अपॉन 1 माइनस MN अपॉन ON. समझ में आ गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ON से डिवाइड कर दिया. I divide the numerator denominator by ON. I divide the numerator and denominator by ON. Do I agree? अब देखिए, ट्रायंगल PQR, agree or not? Triangle PQR and triangle PON. Triangle PQR, छोटा वाला triangle, and PON are similar. Aren't they similar? आइए देखिए कैसे. Please check it out. If I talk about the triangle PQR, so one of the angle is 90 degree. One angle is A. The third angle has to be 90 minus A or not. If I talk about the triangle this, so one of the angle is 90 degree. One angle is A. One angle has to be 90 minus A. So they are similar triangles or not? Similar triangle की sides proportional होती हैं कि नहीं होती हैं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है. बोलिए होता है कि नहीं होता? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, हाँ या ना? तो ये दोनों ऑरेंज कलर के ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा. तो व्हाट इज QR अपॉन ON? QR अपॉन ON, जो QR अपॉन ON है, QR क्या है? बोलिए, क्या इस ट्रायंगल में एंगल ए का बेस है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? और ON क्या है? इस ट्रायंगल में एंगल ए का बेस है कि नहीं? तो बेस अपॉन बेस इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज और नॉट? बोलिए अग्री और नॉट? ऑल ऑफ यू गेट दैट पॉइंट? ऑल ऑफ यू गेट दैट पॉइंट? That is why they are similar and I get to see at once. Please convince yourself we are right or not. We are right or not. We can write QR. This is QR. Agree or not? This is QR upon ON. इस रेशियो पे मैं अटैक कर रहा हूँ, इस रेशियो पे. आई एम अटैकिंग ऑन दिस रेशियो. QR अपॉन ON कैन बी रिटन एज, ये बेस अपॉन बेस है कि नहीं? क्या ये एंगल ए का बेस है कि नहीं QR? क्या यहाँ पे एंगल ए का बेस ON है कि नहीं है? तो बेस अपॉन बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो PQ अपॉन, बोलिए, बोल भी नहीं पा रहे आप, PQ अपॉन OP और नॉट? क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग? Is it PQ upon OP or not? So plus P upon Is it PQ upon OP or not? All of you are convinced about it? अब मैंने यहां पे लिखा, देखिए ध्यान से बेटा, all of you, I write QR upon ON as PQ upon OP. Am I correct? Plus PN अपॉन ON रहने दिया. PN अपॉन ON ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है. बहुत अच्छा रेशियो है. वेरी नाइस. आई डोंट इंटरफियर विद दिस एट ऑल. बस हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया. ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड बिकॉज दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. हैप्पी ऑल? राइट. अपॉन, हेडिंग टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट, हेडिंग टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट एंड चेक इट आउट. 1 माइनस. अब मैंने एक काम किया, क्या MN भी रिटन एज RP और नॉट? MN can be written as RP or not? MN can be written as RP. ON हमने अब यहां पे RP अपॉन क्या कर दिया? एक मल्टीप्लाई डिवाइड किया. RP अपॉन QR कर दिया. क्या कर दिया? QR. तो QR अपॉन ON. अग्री और नॉट? हैप्पी ऑल? कितने पापड़ बेले आप देखते जाइए, कितने पापड़ बेले. इसीलिए कह रहे हैं ये बहुत ही फंडामेंटल है.
It is a very fundamental one. Agree or not? QR हमने insert किया है. अब एक काम और कर दिया मैंने भाई. कहेंगे अभी भी? हाँ बिल्कुल अभी भी. अब QR upon ON can be written as PQ upon OP or not? यहाँ पे भी बोलिए agree or not? So बस we are just inches away from the answer. कहिए तो इसी स्टेप में कर दें, कहिए तो अगले स्टेप में करें. I think we should do it in the next step because it will let you. Maybe I can put it over here and can do it. So placement has to be decided. So maybe I can write this garbage over here. Where should I write this garbage? Maybe I can pull it down slightly and can put it over here, right? So that I can keep working here. Agree or not? Okay. Can you see that the same thing can be written as, I don't want to scroll through because everything is written over here. I don't want to scroll through. Can you see that everything is copied? PQ upon OP plus PN upon ON upon, agree, upon what? बोलिए 1 minus RP upon QR into Q1 upon ON can be written PQ upon OP. And dear friend, we have done it. We have done it. What is this going to be? बोलिए PQ upon OP क्या होगा? PQ upon OP. बोलिए हाँ है ना? In this right angle triangle. बोलिए. In this right angle triangle, PQ upon OP is perpendicular upon base for tan beta. Agree or not? So is it tan beta or not? Tan B or not? Plus Pn upon On. Pn upon On is in this triangle tan A or not? Agree, upon 1 minus RP upon QR. RP upon QR is perpendicular upon base for angle A or not? बोली हाँ या ना? So is it tan A or not? Agree. And PQ upon OP, already you have seen, PQ upon OP is tan B. Agree? Tan B. So let me write it nicely. 1 minus tan A tan B. Agree or not? So this is what is tan A plus B. Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. It is a fundamental proof. You could got it in a very short number of steps. बस ratio लेके आप निकाल सकते थे, but that would have been a cheating. You have to get it geometrically from the basic structure, right? And this is how basically you get this. Sin and cos was that, and this is this. तो tan को भी थोड़ा arrange कर रहे थे. Tan A पहले लिख देते हैं, tan B बाद में लिख देते हैं. So if you write it back over here, so tan A plus B. Can I scroll through now? Because I don't have any option but to, maybe I can shift it. Oh, that's great technique. That's a great technique. So why can't I use this facility? Yeah, I can. I can always use this, right? So I write with different color over here and put it into the box. That is tan A plus B is equal to tan A plus tan B. Not finding a proper place to write this, dear. Not good enough space. The intention is to write it in the visible portion only. Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Yes. Agree? Sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. Cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. And tan A plus B is tan A tan plus tan B upon 1 minus tan A tan B.
Yeah, I can write in a bold manner over here if you want to, because हमको पता नहीं क्यों लग रहा, बहुत कंस्टेंट स्पेस में लिखा है tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. न्यूमरेटर में दोनों का सम, डिनोमिनेटर 1 minus product of the two is. What we have seen now is the sum formula for sin a plus b, cos a plus b and tan a plus b. In the beginning of the next session, I will see the difference formula, sin a minus b, cos a minus b and tan a minus b. Then go